I call one word for myself, which is being hustler. What do you feel like? The leadership is inherited? तो आप जितना मर्जी आपके अंदर क्वालिटीज हो, you can be a leader. Where the consumers will come from? हर वक्त perfection के चक्कर में ना पड़ा करें. You kept on delaying things up. I know, मुझे पता है अभी कौन सी चीजें और मजीद बेहतर हो सकती थी. Skill is that one thing that is now in the comparison of almost everything. ये जितनी भी बातें हैं ना, ये गली मोहल्ले की बातें हैं. कैसी कौन को आप खड़ा कर रहे हैं यार? There is always a room for education. मैं तो सोच रहा हूँ बैचलर ना ही करो. खुदा का नाम है यार. Can you just list down the 3 main attributes? About 10 years back, I had a major shock in my life. How far are we from the ethics? जितने आप दीन से दूर होंगे, उतना आप मोरालिटी से दूर होंगे. This is the end of the world. Instead of falling, I went up with 10x pace. जो true leader होता है वो he fights. This question ever ends? So let's start it off with a very simple, yet a bit of a difficult question for most of the people. People find it difficult to answer it because I think that is where the most of the things start out, like knowing yourself, and that is where you carry out your further steps and achieve things in the life. So my first question is definitely this, that who is Hamid Mahmood? People already know, like you've been, at the fancy designations of a lot of the companies. You've done a lot of achievements in terms of, the company achievements and all that stuff. But I think the people would like to know, like, who is Hamid Mahmood in person? What he wants to achieve in life, what is going your life these days, and where you feel like your surroundings are reaching, and are you just copying up with that, or where the things are going for you? So who is Hamid Mahmood in person as a whole? Thank you so much, Ubaid. And Hamid Mahmood as a person, if you ask me, I call one word for myself, which is being hustler. आपने पूछा कि हामिद कौन है और how do we know about oneself? So I'm into the mid-30s now, और मैं one thing I probably do almost every day is I ask about myself, who you are, or based on my experiences, based on my strengths, based on what people praise for, based on what achievements I have, and what things I like, what things I don't like, where I excel, where I suck. All of these things are actually evident of who Hamid is. So I remember when I was like 15 years old, I was a hustler even at that time. I was heading my whole school as a head of school student. So the element of leadership was, I think, in the DNA. Leading. When I was in the 4th grade, I remember Hamid was, the head boy of the class, making sure everybody is quiet and making sure that everybody is disciplined and completing the homework in time when the teacher is not there. So I think इस तरह की जो indications होती हैं, that tells you who you are. कभी भी मुझे टिक के काम करना अच्छा नहीं लगता. I don't like that. I'm always into the hustle mode. Yes, नींद पूरी करता हूँ मैं, ये मेरी आदत है. उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. जो बेसिक हैं कि नींद पूरी करनी है, वर्कआउट करना है. लेकिन मैं I remain in the remote mode all the time. फिरता रहूँगा, बात करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा. तो कुछ लोग मुझे इंट्रोवर्ट करते हैं, कुछ लोग मुझे एक्सट्रोवर्ट करते हैं. इंट्रोवर्ट में तब होता हूँ कि जब कोई काम की बात नहीं होती, और एक्सट्रोवर्ट में तब होता हूँ जब काम की करने की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं. और probably I can speak for hours and hours. I may speak for like 4-5 hours straight. अगर वो काम की बात है, I will be extremely extrovert. I will be talking to all of you guys, thousands of people. So ये जितनी भी indications होती हैं, I think इंसान को उसको understand करना चाहिए. Why मैं प्रोग्रामर नहीं बना, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर हाउस को बनाया और उसको चलाया. और why मेरा focus 75% marketing में होता है, 25% production में होता है, as a focus strategy.
उसकी रीज़न ये है कि वो मेरे स्ट्रेंथ जोन्स हैं. So you particularly use one specific keyword of a leadership a lot, I'm like, while your introduction, and I felt overwhelmed, with this, hearing this keyword out, because most of the people, even being the leaders, they don't know themselves that they are the leaders, and I think they just keep on pressing themselves, they feel like, there is yet to come at, there is yet they can just evolve over time. So do you feel like the leadership is inherited, or do you feel like this is something that evolves in person within time, and the person just keeps on finding out like these are the attributes that leads me towards the leadership, and that is how I can just come or to a stage where I can just lead a bunch of the people, where I can lead maybe the society, where I can lead maybe the community or the nation or the country. We have seen across a whole lot of leaders, but I think I've met few of the individuals who I personally feel like, because I exactly feel the depth of your answer into it, So I personally felt like that these are the individuals that they, somehow possess particular attributes of the leadership, or maybe leading towards the leadership, but they are just not, expressive themselves. They're just not finding that who they are actually, and they are, I think, losing their way as a whole. So my question is, like, what do you feel like? The leadership is inherited, or that is the one thing that evolves over time, and the person can, keep on distinguishing himself, like these are the attributes that drives me towards leadership? मैं आपको इसका ना आंसर आसान कर देता हूँ, और उससे फिर पता लग जाएगा कि आप लीडर बाय बर्थ होते हैं या इवॉल्व होते हैं. सो लीडरशिप, मेरे एक बुक का चैप्टर भी है जो मेरी अपकमिंग बुक है. उसमें पूरा मैंने एक चैप्टर लीडरशिप के ऊपर डाला हुआ. लीडर कौन होता है, उसके अंदर क्या ट्रेट्स होती हैं. देयर आर अबाउट 25 ट्रेट्स मोर और लेस ऑफ द लीडरशिप, जिसमें लीडर ऑनेस्ट होता है, लीडर कैरिस्मेटिक होता है, लीडर पुट्स अदर्स फर्स्ट, himself back, leader is a good communicator, leader is the one who creates the justice, leader is the one who speaks with full affirmation, and almost 10 to 15 more details. अब आपको इस चीज़ का आंसर मैं ऐसे करता हूँ. If you're born with 20 out of 25 traits, you'll be born with some traits, and you'll be left with the rest. ठीक है? तो the highest degree of the traits would mean कि ये पैदाइशी लीडर था. That makes sense. So I'm like, if the 10 boxes are already ticked, or maybe 12 boxes are already ticked in that 25 list, so you can say like few of the main attributes have been inherited, and the rest can evolve over time. अब मैं आपको अपने से थोड़ा सा रिलेट करवाता हूँ. मुझे कैसे फील होता था. मेरे और मेरे भाई की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ठीक है? सेम मदर, सेम फादर, ज़मीन आसमान का फ़र्क. आई बिलीव ही इज़ अ लीडर टू, बट ही इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट नेचर देन माइन. आपने अक्सर देखा होगा बहन भाइयों की नेचर जो है ना वो डिफरेंट होती है. अल्लाह ताला ने जिस इंसान को भी बनाया है वो डिफरेंट फितरत के साथ बनाया हुआ है. हर इंसान की अपनी फितरत होती है. इस बात को तो अंडरस्टैंड करते हैं आप. हर इंसान की अपनी फितरत होती है. कुछ लोग नरम दिल होते हैं, कुछ लोग सख्त दिल होते हैं, कुछ लोगों के अंदर कंजूसी का एलिमेंट ज़्यादा होता है. ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में वो उनको कोई बताया नहीं जाता, वो इनहेरिटेड होता है. कुछ लोग फराख दिल होते हैं, यार ये बंदा जो है ना ये पैसे बहुत खर्चता है, फजूल खर्च है ये. ठीक है? कुछ लोग हंसमुख होते हैं, कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा ड्राई होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलने को बेहतर समझते हैं, या लोगों में बैठने को बेहतर समझते हैं. कुछ लोग बचपन से ही कहते हैं कि यार बस मैं क्लास के ना कोने में बैठा रहता हूँ, आई डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद एनीवन. तो लेट्स से 25 ट्रेट्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा. 17 या 15 आपको इनहेरिटेड अल्लाह ताला ने डाल दी, जो कि एक लीडर में होना चाहिए. अब वो जो बाकी की 10 हैं, those 10 qualities depend on the circumstances. I personally think कि मेरे अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ क्यों इवॉल्व हुई, क्योंकि मैं शायद कभी भी अपने वाले साहब के साथ नहीं रहा. एंड आई बिलीव कि दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. एक एक्सटर्नल बंदा सोचेगा कि यार
एक डैड के बगैर रहना कितना मुश्किल होगा. That was a tough time. But उसने किया क्या जिसका मुझे फ़ायदा हुआ. I was exposed in full even when I was age of 5 to the external world. With the full pace. Now I have to deal जो कि शायद आज का बच्चा 25-30 साल की उम्र में भी नहीं करेगा क्योंकि उसके माँ बाप होते हैं. I was exposed at the age of 5 years. अब मैंने किसी से डीलिंग करनी है, मैंने निगोशिएट करना है, मैंने खेलना है, मैंने लड़ना है, मैंने लीड करना है, मैंने किसी के पीछे चलना है. ये सारी की सारी डिसीजंस किसके थे? मेरे अपने थे. तो मैंने बाय द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को इवॉल्व किया कि मैं किस किस मौके पे क्या क्या कर रहा हूँ. तो फिर मैंने फाइंड आउट किया कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को अपने साथ लेके चलूँ. मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों जो मेरे से कमज़ोर लोग हैं मैं उनके साथ नरमी के साथ पेश आऊँ. मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ. मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने मफादात से ज़्यादा लोगों के फ़ायदे को सामने रखूँ. ये सारी की सारी चीज़ें कुछ बाय बर्थ और कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इवॉल्व किया. ये उसकी ज़रूरत थी. और कुछ मुकद्दर की भी चीज़ें होती हैं. अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपको जो है वो लोगों पे हाकिम बनाए. तो कुछ मुकद्दर की भी चीज़ें होती हैं. अल्लाह ताला नहीं चाहते तो आप जितना मर्जी आपके अंदर क्वालिटीज़ हो यू कैन बी अ लीडर. सो ये सारी चीज़ें. सो 3 थिंग्स. नंबर 1 आप यस बाय बर्थ आपके अंदर मेजर क्वालिटीज़ होनी चाहिए. अगर आपके पास अंदर मेजर क्वालिटीज़ नहीं है you will do a really bad job being a leader. जैसे आपने देखा होगा कि every person cannot be an entrepreneur. Every person. Exactly. He might make so big mistakes कि सबका काम खराब करेगा वो. ठीक है. That's because अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर वो qualities नहीं है. He might be a good follower. किसी अच्छे leader के अंदर अगर वो काम कर लेता है. कुछ चीज़ें वो by the passage of time, circumstances of life उसमें इवॉल्व करेगा. और कुछ अल्लाह के ताला की तरफ से भी होता है कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर से मंजूरी दी हुई है कि नहीं दी हुई. Yeah, so that is more of like, we are the pieces of the puzzle. So we all need to connect together because not everybody can be a creator. Not everybody can be a consumer. If everybody is going to be a creator. Everybody has a different nature. Yeah. Fitrat. Yeah, exactly. So I'm like, if everybody is going to be the creator, by birth or by inheritor, so where the consumers will come from, Yeah. So that is where, the existence of the world is lying at. I'm like, we need to understand it out that there is a diversity in the world. There's a diversity. And the diverse nature of the world is really forcing it to go by a complete flow. And without, bring the diversity on board. Obviously, as and that is probably why everybody cannot fall into being a communist, and everybody cannot fall into being a capitalist. Yeah. There has to be a balance. Yeah. And the balance makes a good society. Yeah, exactly. Coming back to our original question, that knowing yourself, So I think few people spend their whole life knowing themselves. Few people just don't even bother to think about, asking this question to themselves. Few people just struggle in terms of, they know the question, like knowing yourself, but they, struggle a lot in knowing themselves. So my question based on this is that, what do you feel that I personally feel like knowing yourself is one of those few questions that, just keep on asking for the rest of your life till the deathbed, you feel like this is the question that you just keep on asking yourself, that these are the attributes, because I think there are certain attributes in yourself that you identify with a specific passage of the life, So you just keep on asking yourselves, this is something that I contain, this is something that I should do, this is something that I get better at, this is something that I can just, expose myself in a better way. So do you feel like this question ever ends, or this is an ongoing question towards, the deathbed? And the person keeps on asking themselves that who is me and what is the purpose of my existence in this world? It grows. Yeah. इसका आंसर ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर human evolves. आज अगर मुझे पता लगा है कि I can lead people, right? Communication. I have good strength of communication, communicating my words to other people. I'm a good negotiator, probably. Good people manager, but that doesn't end. If you keep exploring yourself, you'll find new things about yourself. एक चीज, दूसरी चीज. The moment you understand yourself,
अगर आपको पता लग गया है कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, आप कहते हैं कि यार मुझे फ्लटर की डेवलपमेंट करते हुए ज़्यादा मज़ा आता है, फ्लटर को बेचते हुए मज़ा नहीं आता। Right. मुझे फ्लटर को बेचते हुए मज़ा आता है, आपको फ्लटर की डेवलपमेंट में मज़ा आता है, बिकॉज दैट्स हु यू आर एंड दैट्स हु आई एम, Yeah. एंड वी आर डिफरेंट पीपल, Yeah. राइट? फितरत हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। Yeah. अगर आपको फ्लटर की डेवलपमेंट करते हुए मज़ा आ रहा है, Right. तो डेवलप दैट स्किल। अगर मुझे बेचते हुए मज़ा आ रहा है, तो मैं प्रॉब्लली अपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा कि जो बेस ही फ्लटर की डेवलपमेंट की सेल पे होगी, एंड आई डू दैट। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर हाईली सेल्स फोकस्ड, वी हैव प्लेंटी ऑफ वेंडर्स, Yeah. we could build our even larger in-house teams, but we play on our strength. That's exactly is the answer. Okay, and one thing we do, and one thing everyone should do, the moment you understand your aptitude, who you are, उसको try करें उसे, ठीक Yeah, है? that was- और हर वक्त perfection के चक्कर में ना पड़ा करें। So 80-20 rule. Yeah. If you're able to achieve or execute your 80% inner self, Yeah. I'm pretty sure if that's your inner self, तो आप वो accelerate करेंगे, आपको मज़ा आएगा, people will praise। लोगों की जो praise होती है ना, उसको नोट करना चाहिए। Yeah. किस मौके पे आके उसने praise किया, किस मौके पे उसने कहा यार क्या फजूल हरकत किया तुमने, या ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, ठीक है? So based on that करना चाहिए। जब आप करेंगे तो वो चीज़ आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, और जितना उसको ज़्यादा करेंगे, वो डेवलप होते होते इंतहाई स्ट्रेंथ के अंदर चेंज हो जाएगी। Yeah. और जो आपकी एवोल्यूशन है, दैट ऑलवेज हैपन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई माइट हैव understood myself 70%, Yeah. but I'm pretty sure not 100% as of yet. जो बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। Yeah. मैं 100% तो शायद Discover करने दुनिया में कोई भी नहीं उसको समझ सकता। तो बट आई कीप ऑन आस्किंग माई सेल्फ, द रीज़न बीइंग इज दैट, ताकि मैं अपनी हामिद का बेस्ट यूटिलाइजेशन फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली और फॉर द सोसाइटी में यूज़ कर सकूँ। Yeah. This makes sense. So, I mean, like, this is very few of the questions that a person just keeps on asking, you know, Yeah. till the deathbed, you know, Yeah. and he just, keeps on evolving over the time. And I think you have just pretty much answered some of the other attributes as well, like, some of the other elements that just fall within that question range. Like, for example, what is the one thing that a person just keeps on doing, without or with asking this question? Like, I think they should give it a try, because these days it's been, and I'm happy with that sort of a trend. People are trying to understand, like, now achieving perfection is, the other name of procrastination. You just keep on procrastinating. Yeah, you should try if you it. just keep on achieving the, the perfection, if you just keep on hunting it out. However, I'm a perfectionist by nature, by the way. Yeah. I hate even 1% issue. 1%. Yeah. Whatever I like is sometimes better than what my client likes. But at the same time, I understand I work with humans. Yeah. When you work with humans, so you might not have 100% perfection. Yeah. So, उनको समझते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनके एक्सपोजर को देखते हुए, if they're doing like 80 to 95% of the job, I'll push for 100% always. But if they're doing like somewhere between 80 to 95% of the job, I'll keep on doing that. So do you ever have an experience on the basis of, like, in terms of achieving the perfection, you kept on delaying things up? Like, do you have any sort of an experience in that? Because I think that is the one habit. Always. So I'm a fine liner. That means कि मैं अपने जितने भी मैंने कुछ स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको मैंने स्टार्ट किया। आई टुक अबाउट 6 months to even start it. And I could have taken 1 year easily. If you just keep on seeking perfection. I know, मुझे पता है अभी कौन सी चीज़ें और मज़ीद बेहतर हो सकती थी, जो मुझे स्टार्ट में ही कर लेनी चाहिए थी। But at the same time जो मेरे peers थे वो मुझे कह रहे थे कि हामिद शुरू करें, और कुछ चीज़ें मैंने bare minimum करके कि यार इसके बगैर काम शुरू नहीं कर सकते। This is the bare minimum. कुछ SOPs मैंने पहले बनाए, कुछ guidelines मैंने पहले बनाई। अच्छा, जो हमारा ऑन बोर्डिंग फॉर्म था, इट टुक मी अ मंथ
with a lot of discussion कि onboarding form में क्या होना चाहिए और आगे 5 साल 10 साल के बाद आपको उसकी कैसे ज़रूरत पड़ सकती है उसके डेटा की and all that कि आप उसको जो जितने भी हमारे members होते हैं let's say उनके फ़ायदे के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. So I would say कि I will start good like जिसको कहते हैं minimum viable product उससे मैं start करूँगा और परफेक्शन की तरफ जाऊंगा लेकिन वो परफेक्शन की वजह से मैं स्टार्ट करना नहीं छोड़ूंगा. So there has to be a balance. Yeah, this makes sense. So yeah, that's pretty much wrapped up with that sort of a thing. Next thing that I want to discuss with you is that that one specific attribute or one specific word that has been compared to a lot of the different things. And I think it's been in the market, it's been all over the place. I see that. I mean, skills have been just compared to education, skills have been just compared to the degree, skills have been just compared to the academic life. I think skill is that one thing that is now in the comparison of almost everything these days. Like people just tend to, like you open up the social media platforms, you tend to feel like, skills have been just now getting compared to this. Now the next day it is just getting compared to this, and the people are like debating over the fact, like in terms of encouraging the people that only skills are something that are enough to just thrive for you in this world, in this current world state. What's your take on it? Like, for example, I would say skills, a person is skillful enough, but he hasn't been that much good. He hasn't spent, he's 25 years old, like he's skillful, whatever the skill you can call it off, even the web developer, you can say. He's skillful enough, but he hasn't spent in the last 25 years much time on the education. Where do you rate that individual, and what do you say, like, what's his mindset if he just keeps on convincing you of, like, this is a skill I'm earning, $10,000 a month, or whatever his personal objective is, because success is something that cannot be quantified, So whatever it is, and he just keeps on, convincing you of, like, yeah, I'm skillful enough, and that is the need of these days, and I think that's pretty much it. And you just try to, convince him of, yeah, no, there is always a room for education. There is always something that you just need to learn, because that is something that, that builds your self-esteem. That is something that builds your knowledge. And we, being the Muslims, we know that ke ilm jo hai wo momin ki miras hai, right? How far away we are from, the education, and how we are getting into the debate and the skills more often than not. And where do you feel like, and where do you rate the skillful person and the other person who's a bit of an away from the education? I think आज मेरी टेक फेस्टिवल में मेरी टॉक थी, एग्जैक्टली मैंने इसी चीज़ के ऊपर बात की जो मैं आपसे कह रहा था कि वीडियो भी देखें उसकी. आई थिंक एक बात याद रखिएगा, जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना, सो फॉर मी courses are steroids. वो आपके जिस्म बड़ा तो कर देते हैं ना, आपने इंजेक्शन लगाया, wanna be like, 6 packs and be a really huge guy, right? तो क्या होता है उसके बाद, साल बाद क्या होगा? Yeah, like you just keep on falling apart. Like maybe नुकसान होगा, short term भी नुकसान होगा, आगे long term भी नुकसान होगा. So for me, जो short courses होते हैं वो steroids होते हैं. एक बात याद रखिएगा कि आपका कोई भी मकाम नहीं, जब जैसे ही द मोमेंट यू गो आउट ऑफ द पाकिस्तान, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा. ये जितनी भी बातें हैं ना, ये गली मोहल्ले की बातें हैं. 500, 1000, 2000, 3000, ये गली मोहल्ले की बातें हैं. और फिर एक हुनर आया फिर चला गया. What about that? जिस एक इमारत जो बनती है ना, उस इमारत की फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होती है, कहते हैं ना, नींव ज़्यादा खोदें, अगर ज़्यादा बड़ा प्लाजा खड़ा करना है तो जो उसकी बुनियादें उसको ज़्यादा स्ट्रांग करें. और जिसकी बुनियादें वीक होंगी तो वो कहते हैं यार बस एक आधा फ्लोर ही खड़ा होगा उसके ऊपर. सो जो स्किल्स वाला मामला है वो बुनियादें हैं एक्चुअली जो आपने अपने ऊपर डाली हुई हैं. पहली बात तो ये है कि जो वीक फाउंडेशंस हैं वो उसकी इमारत गिर जाएगी. क्योंकि वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि आप एक स्किल सीखेंगे तो हो सकता है 2 साल बाद उसकी कोई औकात ना रहे. फिर नया स्किल सीखेंगे, फिर दोबारा लर्न करेंगे, क्या है ये, ठीक है. सो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, एक बात याद रखिए कि वो यस देयर इज़ अ डिबेट कि उनको बने बनाए बंदे हमें देने चाहिए, मगर आप उनके अगर आप कॉन्सेप्ट को पूछेंगे कि वो क्या पढ़ाते हैं तो वो आपको बेस पढ़ाते हैं. वो आपको कॉन्सेप्ट्स देते हैं
कि आपने बिजनेस कैसे करना है। अगर मैं बिजनेस का स्टूडेंट था तो मुझे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स दिए उन्होंने, बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स दिए, मुझे हाई लेवल HTML भी बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया, सारा कुछ उन्होंने मुझे समझाया। सिमिलरली एक जो बैचलर कंप्यूटर साइंसेस का होता है तो वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग के ऊप के कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको दे देता है और कहता है आगे जो फ्रेमवर्क्स वगैरह होते हैं ना वो खुद ही सीखें। उसके लिए ठीक है, यू कैन शार्पन योर स्किल्स बाय यूडेमी जो कहा जाता है आजकल, ये डिफरेंट कोर्सेज आए हुए हैं, आप ठीक है वहाँ से जाके अपने आप को शार्पन करें। बल्कि वो तो साल के अंदर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस भी करनी चाहिए और मल्टीपल एक्सटर्नल बुक्स भी पढ़नी चाहिए। सो एक बात याद रखिए कि जो तालीम के बगैर इमारत खड़ी होगी वो एक तो जल्दी गिर जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, मैं US के अंदर मास्टरमाइंड्स का कुछ हिस्सा भी हूँ। देयर इज़ अ मास्टरमाइंड कॉल्ड गैदरिंग द किंग्स। उसके अंदर मैं उनका जो 7 फिगर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या मल्टीपल 7, 8 और 9 फिगर के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं हिस्सा भी हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी। और जिसके अंदर बाकी आई मे बी द ओनली पाकिस्तानी ओवर देयर। तो ये जो दुनिया में टॉप टियर के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यू थिंक ये आपको कोर्सेज वाले लगते हैं? कम ऑन। यू थिंक ये 500,000 वाले लगते हैं? कम ऑन। वो तो उनका शॉर्टेस्ट यूनिट होता है जिसको आप या ये जो बच्चे आजकल के बनना चाह रहे हैं, दे आर द पीपल जो कहते हैं कि यार हमने आपको पता है लाइक पाकिस्तानी PKR में 3.5 मिलियन डॉलर कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 1 अरब PKR। आप कह रहे हैं कि मैंने महीने के 2 लाख 3 लाख कमाने हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमने मल्टीपल 7 फिगर, लेट्स से $3.5 मिलियन पे आप जाते हैं तो 1 अरब PKR की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो है ना यूनिकॉर्न्स खड़े हुए हैं, $1 बिलियन कंपनीज खड़ी हैं। यू थिंक कि आप यूडेमी के कोर्स से आप यूनिकॉर्न खड़ा कर सकते हैं? यार व्हाट अ स्टुपिडिटी इज दैट। कैसी कौन को आप खड़ा कर रहे हैं? खुदा का नाम है। सो इट्स ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें उन्होंने ये तो बता दिया कि यार ये कोर्सेज करने हैं, सारा कुछ करने हैं। और अगेन मैं कोर्सेज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐड ऑन होना चाहिए। हमें ये तो उन्होंने बता दिया कि ये कोर्सेज करने हैं, ये सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने काउंटर थ्योरी तो नहीं दी आपको। काउंटर थ्योरी क्या, आप ज़रा दुबई में जाएं, आपको देखें आपको जॉब मिलती है आप डिग्री के बगैर आपको शायद वो एंटर भी नहीं होने देंगे। अब उन्होंने आई थिंक अभी रिसेंटली बैन भी लगाया। आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मास्टर्स होंगे आपके लिए आसानी है, आप यूरोप के अंदर जाके बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं। आप US के अंदर जाके, व्हेन आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एंटर्ड इनटू द न्यूयॉर्क सिटी एज अ CEO। आई गिव जॉब्स टू द अमेरिकन्स। तो अब आपने ये तय करना है कि आपने दुनिया के अंदर अपना को मुकाम बनाना है, या आपने वो जो probably they're selling मंजन्स and all that you call it, तो उनकी बात सुन के आपने अपना और अपने घर वालों का, अपनी सोसाइटी का जो सारा सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देना और एक शॉर्ट टर्म आवाम पैदा करनी है। Yeah, that is the reason. I'm further elaborating this question a bit. Like that is the reason. Like we see the person who possesses a skill, they come and go on the regular basis, you know. But the person who seek a regular, education, or who has an educational background, he sustains for a very longer period of time just because of the fact, his foundation is strong. He builds those visionary elements that I think skills can never do. There is a huge grooming जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, आप लोगों से डिस्कस करते हैं, पीयर्स से डिस्कस करते हैं, उनके साथ गुजारते हैं, सिनेरियोज होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, टीचर्स के साथ रहते हैं, यू लर्न द रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। अब यकीन करें आप इस सारी चीज़ों से नहीं गुजरेंगे। मेरे सामने 2 बंदे बिठाएं, शायद मैं आपको बता दूँ कि ये कोर्स वाला है और ये डिग्री वाला है। This is a simple comparison. There is a huge grooming issue as well. वो बच्चा ग्रूम ही नहीं होता, वो शॉर्ट टेम्पर होगा, वो छोटी छोटी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं ऐसी गलती करेगा, आप कहेंगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। सो देयर इज़ अ ह्यूज ग्रूमिंग डिफरेंस एज वेल, जो कि पता लग जाता है। और आपने लेट्स से आपने अच्छी सीट्स पे, गवर्नमेंट की सीट्स पे लगना है, आपको लगता है कोर्सेस वालों को वो लगाएंगे सीट्स पे? आपने अगर लीड करना है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो तो कहते हैं कि आपने MPhil किया हुआ है, आपने कौन सी दुनिया की जो है ना वो पढ़ाइयाँ की हुई हैं, फिर जाके वो आपको कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा फेलियर है। दिस इज like incomplete theory. That is the reason, like I personally feel myself that
there is no just comparison between the skills versus the education or the skills versus the degree. You know, I mean, like I personally feel like you're comparing, you know, the water with the tea, you can say, because the water is something that you just need to drink anyway to, you know. I think ये जुल्म है हमारी कौम के ऊपर. This is the biggest thing. जुल्म ऐसे है कि just because you have an institute, and you want to get more people on that institute, you want to give a theory, जिससे लोग impress हो कि आपके institute में लोग भेजें. आप ये तो देख रहे हैं कि लोग भेजें, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसके बाद कितने लोगों ने अपने फ्यूचर को तबाह किया. आप सबको अकोमोडेट तो नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसे बच्चे जो कितने लोग मेरे पास आते हैं, हामिद साहब बैचलर कर लें या ना कर लें, मैं तो सोच रहा हूँ बैचलर ना ही करूँ. खुदा का नाम है यार. That is the same thing that I just come across. Yeah, that is exactly the same thing that I just come across. That people nowadays, like in our society, they have been, you know, just building their mindset this way. आप मेहनत ज़्यादा कर लें ना. आपको जल्दी जाने का शौक है, आप पढ़ाई करें, यूनिवर्सिटी पढ़ें, रात के टाइम जॉब करें, रात के टाइम आप चलें, थोड़ी फ्रीलांसिंग भी कर लें. आपको मेहनत से किसी ने मना किया है? मुझे याद है कि हम 3-3 जॉब्स भी करते थे, या पढ़ाई के साथ जॉब भी करते थे, दीन के काम भी करते थे. तो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के आप कह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म अप्रोच को छोड़ देना. That's not a good theory. That's not even existing theory. Yeah, near to be a good theory as a full. Yeah, that's totally, I think, the feel like, and I think that is probably the content or the biggest thing that should have been spread as soon as possible. And that's what we're trying to do as well. So if I'm here, I want to make sure that the right mindset inculcates in our youth and society and everywhere in Pakistan. Yeah, that is the purpose. That is the purpose that we, being in the part of the industry, I mean, like we being here doing the practical implementation ourselves, we are just trying to bring, you know, the basics that people should know about. And that is the foundation that they should need to build themselves on, you know. I mean, like that is something that people are these days, I think, parting ways themselves, you know. Exactly. I mean, like that is the thing that is just killing us badly, and that is the thing that is just, you know, giving us a slow poison, and we're not bothering it because everybody. Yeah, I can understand it out, like in terms of inflation, like when things get hard for you, that is the time for the survival. That is the time that you just find out. That is the time you just try to find out new norms, new ways to make money and all that stuff. But that doesn't mean like you go for a short term. I remember कि जब मैं masters में MBA कर रहा था मैं, so उसके साथ साथ MBA के मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं जॉब करता था साथ. Yeah, it happened. जॉब से 17,000 रुपये कमाता था महीने के उस टाइम, ऑलमोस्ट बैक इन 2007-8 की बात बता रहा हूँ. MBA कर रहा था, तो वो जो पैसे कमाते थे वो लगाते भी थे, थोड़े घर में यूज करते थे. So I think circumstances are not an excuse. You should go ahead and do the best, go extra mile, do it. Yeah, exactly. And that is why, I mean, like, I think one important message that I want to, you know, give to the people that are just listening us right now. I think you need to find out the people that you're synced your mindset at, or you feel like, your mindset is syncing, and then maybe you will always find out that the next person is maybe, you know, one step ahead from you at all. Because you did it in 2007 or 6 or 2008. I did it in 2017 and 18. I did 3 things at the same time, to be honest. And, you know, I mean, like I went through the same sort of a journey. I, you know, been the part of the family business. I had been doing my degree. I had been, you know, starting my software house as well, 6 years back. So I think that is a story that somehow syncs, like in a different ways. And that is probably the case that you start finding out yourself. And yeah, that is properly said that when things get tough, I think you need to find out to help you out more by working hard instead of finding out the short terms. But abhi current scenario mein aise hi ho raha hai, because these days, like, people are spreading that sort of an awareness, like, you know, that's what my question was, like, skill has been against everything, you know. Yeah, skill is powerful, you know, skill is very powerful. You cannot, you know, survive without the practical implementation. हुनर के बगैर तो आप like गुजारा नहीं कर सकते. So हुनर has to be for the particular job that you're doing. You have to be very skilled in it.
Yeah. But the base has to be with the proper education. Yeah, but comparing it with the education, I mean, like, I think that's comparing the water with the tea. You know, I mean, like, you need to drink water anywhere. You know, that is something that, you know, that just keeps you moving. You know, Exactly. It keeps you alive. But the tea is optional. You know, I mean, like, optional in a way, like, you need to. Also, I mean, like, these days in the art society, tea is still that sort of a thing that is essential, becoming essential to be, you know, wake up and working at. But you know, that is optional to a certain extent, because the education gives you enough drive that you can just, you know, stay good in the life anywhere. So that pretty much sums it up. I want to ask one more thing with you in this case. There are plenty more to come though, but the one main important question, if I ask you, like, can you just list down the 3 main attributes a person can think of, like, these are the 3 main attributes that I can personally possess to prosper in the life, regardless of the fact, like, whatever the attributes he inherits by birth and all that stuff. But is there a list of 3 attributes, you know, or is there a list of 3 those traits that a person can, you know, build a tree on top of it, or build a building on top of it, you know, or there is no such attributes exist? Do you feel like in your book or in your mindset, you feel like there are the 3 attributes that a person can learn and he can do enough in his life, whichever the attributes he possessed by inheritance? I think the 3 is very less number. लेकिन अगर इसमें से आप मेरे से सबसे ज़रूरी चीज़ें पूछें, अगर आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है अपनी ज़ात के एतबार से जो आपको चेंज चाहिए, वो फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द वेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और उसके मुताबिक ज़िंदगी, दैट एसेंशियली मीन्स के जो आपके लोगों के साथ मामलात हैं वो ठीक होने चाहिए. सो नंबर 1 थिंग टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो आपकी सक्सेस में रोड बैरियर बन जाएंगे वो. Because eventually and essentially you have to work with humans. So number 1 key is अच्छे अखलाक. Right? We can sum it up as ethics or the moral values. So up to some extent, I would say. Yeah. अच्छा. Number 2 thing, subject matter expert. Okay. Be the best in who you are, and let's take it to the monetary side. Take it to the monetary side, और उसके अंदर इतना एक्सेल करें कि आपको भी लगना शुरू हो जाए कि यार अब मार्केट में कोई इस जैसा नहीं बचा. It takes time, like 5 years, 10 years, 15 years, जो कि पूरी जर्नी है. I think कि subject matter expert होना is extremely important to be successful. Just like I'm talking to you, because मेरे पीछे से इस चीज़ का exact experience जुड़ा हुआ है. 18 साल का, ठीक है, जर्नी है. और इसी से मैं कमाता हूँ. I make money with that, and I'm talking to you with that, and I want others to actually make money with that too. So number 2 thing is being the subject matter expert, right? And number 3 thing that you need to have in your life is you need to keep on evolving yourself. There's no limit. And that is only possible with having a bigger vision in the mind. The people who live without the vision often die younger too. And there are actually theories about it. Right? You can say it. अपनी जिंदगी को पहले अखलाकियात, फिर पैसे सही कमाने के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और फिर अपनी जिंदगी को एक विजन के साथ टैग करें. ठीक है? उस विजन का मकसद क्या होता है? वो आपका एंड पॉइंट होता है. आपने जाना कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल, योर विजन कुड बी दुनियावी एतबार से having a company that makes $100 million, या $10 million, या $1 billion, whatever. जो भी आपको लगता है कि यार जिंदगी में 30 साल में 50 साल में मैं यहाँ तक तो मुझे लगता है मैं पहुँच जाऊँगा ये जर्नी के साथ. ठीक है? मॉनेटरी एंड विजन आ गया.
अच्छा, फिर उससे फिर आपका सोसाइटी वाला एंड विजन भी आपने कंक्लूड करना है, राइट? कि वो जो पैसे आएंगे मेरे पास उससे मैं करूँगा क्या? क्या मैं एक मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे होते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार लोगों के अंदर तालीम आ जाए। या ठीक है, ये अब एक बिगर विजन का हिस्सा है, Yeah. क्योंकि आप अपनी सोसाइटी को कामयाब देखना चाहते हैं। Yeah. विजन है ये। और आप अपलिफ्ट कैसे कर रहे हैं? विद द नॉलेज। पैसे तो नहीं पंप इन कर रहे हैं ना, विद नॉलेज कर रहे हैं, राइट? अच्छा, इट कुड बी कि आप तबलीग शुरू कर दें लोगों को, टॉक अबाउट कि यार आप सीधे रास्ते पे चलें। ठीक है, इट कुड बी कि आप फाउंडेशन अपनी कोई खोल लें कि यार मैं यतीम बच्चों की कफालत करनी है, मैंने बेवाओं की कफालत करनी है, मैंने जो कमज़ोर लोग हैं उनकी कफालत करनी है। इट कुड बी कि मैं एनवायरमेंटल चेंज को बेहतर करने के लिए कोई काम कर सकता हूँ। सो ऑलवेज टैग योरसेल्फ विद अ विजन, because it's a vision that drives you towards the success for the rest of your life. So with strong foundations that you have with education skills, वो जो आपको मैंने बताया है कि अपना सिस्टम ठीक करें, and with the good nature, you need an end goal in your life कि जब मैं दुनिया से जा रहा हूँगा तो उस टाइम पे मेरी अचीवमेंट क्या, आइडियल अचीवमेंट क्या है, वो आपको बहुत एक्सेलरेट कर देगी ज़िंदगी के अंदर. These are the three things. So coming down to a very important thing, I mean, like the existence of the very important thing that we are missing these days, and that is the ethics. What's your take on that? Like, how far are we from the ethics, and what is the role that the ethics can bring in our life? You know, I mean, I feel like people, and I think that is a nutshell of a lot of habitual activities. You know, I mean, like झूठ उसमें शामिल है और बदनीयती उसमें शामिल है, you know, not being loyal ये भी उसमें शामिल है, you know, not the dedicated one, not serving as you are getting paid for. सारी ये activities, I mean, like का मजमुआ, that is what that I just call it as an ethics, you know. How far is it missing in our day-to-day life, and what penalty are we facing because of it? Because I think so, I personally think so, like the missing perspective of ethics in our life is just costing us not only monetary, not only, you know, in one dimension particularly, but in multiple dimensions. You know, I mean, like, we are failed to understand it out. I mean, like, it has been, you know, descended to us from our forefathers and focused a lot in our religious activities, in our religious, you know, learnings as well. बट वी आर फार अवे कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ बोलने के बाद, यू नो, वी डोंट रियलाइज इट. इफ एनीथिंग बैड हैपन्स टू अस, वी डोंट रियलाइज इट दैट इट probably because of this, and we are getting so much habitual of it, and we are becoming, you know, so much reluctant to understand that this may be a root cause of it. So I think there is a whole lot of an ethical I mean, like, activities that are missing in our, you know, society. So what's your take on it, and what penalty are we facing out of it? And yeah, I mean, like, that is what we are here to spread it out, you know, spread out the content, spread out, you know, the message that I think this is the root cause. You don't need, I think the rest of the things, the skills, you know, I mean, like, not entirely knowledge, but, you know, a certain part of the education that will come later. But the ethical values and the moral values are something that should be inside, you know, I mean, like, inside you and deep rooted inside you, because that is something that defines your character. That is something that defines you as a whole. So what penalty we are facing because of the ethics, and what the ethics can do, what we are missing right now? First of all, we need to understand कि actually में ethics को relate आप कैसे करवाएंगे, and why आपको ethical होना चाहिए. So नंबर वन चीज़ ये है कि आप जो जिन रूल्स को अबाइड कर रहे होते हैं या अपने एक्शंस ले रहे होते हैं, वो बेस्ड ऑन टू थिंग्स होती हैं. Either you are benchmarking the law, कि ये चीज़ लॉ के अंदर मुझे अलाउ कर रही है, कि इशारा मैं तोड़ रहा हूँ कि मुझे लॉ में अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा. उसमें ऑफ कोर्स नहीं कर रहा कि आई हैव टू, इफ देयर इज़ अ रेड सिग्नल सो आई कैन नॉट पास थ्रू. अच्छा, ये तो आपके लॉ में आ गया. या आप एग्रीमेंट रीच नहीं कर सकते, लॉ में आ गया. बट देन देयर आर सम मोरालिटी essence as well.
अच्छा, अब मोरालिटी क्या हो सकती है कि मैंने किसी को पता नहीं लगा लेकिन मैंने उसको धोखा दे दिया, किसी को पता नहीं लगा और मैंने उसके साथ झूठ बोल दिया, मैंने बदतमीज़ी से पेश आया, मैंने गाली दे दी, मैंने बदगुमानी की। ये सारे के सारे इश्यूज अपार्ट फ्रॉम लीगल स्टैंड पॉइंट कुछ मोरल इश्यूज भी होते हैं। सो देयर आर टू थिंग्स एंड मोरल इश्यूज कैन बी लीगल इश्यूज एज वेल, और थोड़ा सा मिक्स कर रही होती हैं दोनों चीज़ें आपस में, कुछ लॉ के अंदर आ जाती हैं, कुछ लॉ के अंदर नहीं आ जाती हैं। मैं अब आपसे खुदा न खासा आपसे बदतमीज़ी करता हूँ तो शायद वो किसी लॉ के अंदर नहीं आएगा, बट मोरली मुझे या एथिकली ऐसे बात नहीं करना चाहिए, अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मोरालिटी आप कहाँ से सीखेंगे? अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत बेसिक लेवल पे एज ए किताबें तो शायद हम वो सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एजुकेशन ऊपर जाती जाती है तो आप ज़्यादा अपने सब्जेक्ट मैटर की चीज़ें पढ़ते हैं और उस पर फोकस नहीं कर पाते, या बहुत ज़्यादा लिटरेचर उसके ऊपर नहीं आया हुआ जो कि आपकी मोरालिटी को हर लेवल पे जाके एड्रेस करे। बचपन में शायद कर रहे होते हैं लेकिन उस पर हमें तो चीज़ों की समझ भी नहीं होती। मोरालिटी सबसे बेहतर बताता है आपको आपका दीन, ठीक है, और हमारा जो सबसे बेहतरीन दीन है वो इस्लाम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एथिकल बिहेवियर्स करने हैं तो उसके लिए देयर इज़ एन ईजी बेंचमार्क विच इज़ दीन इस्लाम, राइट? अब जितने आप दीन से दूर होंगे उतना आप मोरालिटी से दूर होंगे, अपार्ट फ्रॉम बीइंग लॉफुल। और द डिफरेंस बिटवीन द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज is actually based on how strong ethics or ethical values you have. Underdeveloped countries, आप जितने भी चले जाएंगे वहाँ पे आपको इसका फुकदान नज़र आएगा। और जब आप सेकंड वर्ल्ड में जाएंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। वन वर्ल्ड में चले जाएंगे वहाँ पे आपको हर बंदा एक दूसरे का ख्याल करता हुआ नज़र आएगा। So the difference between developed countries and underdeveloped countries is majorly due to the ethical behaviors. और अगर वन वर्ल्ड कंट्रीज वो चीज़ें जो इस्लाम की बेंचमार्क वाली चीज़ें उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, दे विल बी सक्सेसफुल एज ए पर्सन, एज ए नेशन, राइट? अब प्रॉब्लम होता है क्या है, व्हेन यू गेट अनएथिकल, या आप किसी को धोखा देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, या उसकी नीयत रखते हैं, या किसी के खैर ख्वाह नहीं होते हैं, या किसी के साथ झूठ बोलते हैं, तो यू आर एक्चुअली डायरेक्टली इंटरफेयरिंग विद humans. And human can only do the transactions when he trusts you. And all of the unethical values are the biggest reason for the mistrust. So, अगर आप as a human, as a business owner, unethical values को adopt कर रहे हैं तो आपके साथ कम लोग बिजनेस करेंगे, इवेंचुअली आपका बिजनेस फॉल डाउन हो जाएगा। अगर आप एज एन एम्प्लॉई ऐसे करेंगे तो आपका एम्प्लॉयर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और इवेंचुअली आपकी ग्रोथ के अंदर बैरियर लग जाएंगे। अगर आप एज ए सोसाइटी गलत काम करेंगे तो उस पूरी सोसाइटी की ग्रोथ रुक जाएगी, बाकी सोसाइटीज़ उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगी और वो फॉल बैक कर जाएंगी। सो दैट इज़ वाई एथिक्स इज सो इम्पोर्टेंट एज ए पर्सन, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, to accelerate and grow. One of the questions that I want to ask you that may just, direct you towards your history and your past, and the purpose of asking this question is just because of the fact, people think he's the owner or he's the CEO. He is sitting out on the fancy designation of the company. He's owning the company. He's a businessman. So he's living a very charming life altogether. That's what most of the people think we think Steve Jobs is living a very peaceful life. Mark Zuckerberg is living a very peaceful life. And the rest of, even in our society, coming down to our local CEOs, local owners, people tend to think this person is living a very peaceful, a very, he comes on a fancy car, he lives in a very good home. So he's living a very top quality life. So the purpose of asking this question is that there is always a herd behind everybody's success.
I'm a strong believer of that, because nothing comes without the pain. Only a person can win a lottery without pain. Even it still demands some sort of depression to go win a lottery in that. So nothing comes without the pain. Is there any event occurred in your life that you felt like, yeah, this was probably the biggest of losses that you just came across, or you felt like, yeah, this was probably the end of the world? I'm like that sort of a thing, or nearest to be the end of the world, because I think so. Most of the startup founders, when they start, most of the the agency owners or the software houses who wants to be the leaders, they come across with the one setback, loss हो गया, 5 लाख डूब गए, 10 लाख डूब गए, 1 crore डूब गया, whatever, employees, they have stolen the code or whatever, and they just don't recover from that setback, and they feel like, yeah, this is the end of the world. So is there any event in your life that you feel like, yeah, this is the end of the world, and it has cost me bigger than I thought, so let's call it a day? Not even thinking about calling it a day, but at least thought about, yeah, this is one of the bigger things that you felt like, yeah, this was the hardest thing. मैं आपकी बात समझ गया हूँ. So there are two mindsets that exist in this world. जितने भी शॉक्स होते हैं वो ह्यूमन लाइफ में कुछ आते हैं, और yes, exactly, about 10 years back I had a major shock in my life. और वो ऐसा शॉक था कि जो अभी आपने बात की है, कि मुझे लग रहा था कि that's end of the world. Yeah. I won't be able to get out of it, and it took me, I think, 1.5 to 2 years to get out of it. लेकिन the good part was that I'm a little rebellious by nature as well. Instead of falling and crying and complaining, I stood up, and there was a time I shifted from being an employee to an employer. Yeah. So I was a little rebellion, and I think everyone should have breakups in their life. Yeah. Because the breakups are the opportunity to open your brain and think next, Yeah. and do the great job. Yeah. So 10 years back, I had suffered through that. It took me like a couple of years to get through it. And when I got through it, so instead of falling, I went up with 10x pace. Yeah. क्योंकि वो दिमाग के जो ताले थे वो खुल गए. So जो viewers हैं, I would tell them कि जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आए तो गिरना नहीं है, बल्कि आपने उठना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि this is who you are. Yeah. And I personally feel like this is one of the main attributes of the leader as well, to be very honest, because most of the people, when they just fall, they crumble, they leave it as a whole. And some of the people, they realize that leaders fight. Even the fight, they fight with the more force. I mean, like when they just fall down, they realize that why I've fallen down, and I can just stand up myself again, just because I had done it in my past. So that is where I think that differentiates, and that is one of the attributes that is underrated and not discussed a bit too much. That when the setback hits you, that is the time, because ज़्यादातर मैंने, अगर आप IT के अंदर भी देखेंगे, I'm sorry I'm saying this, 2 साल 3 साल टेन्योर होता है मैक्सिमम लीडर्स का. जैसे ही उनको फॉल बैक मिलता है, जैसे ही उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म होता है, उनको थोड़ा सा तंग किया जाता है, वो कहते हैं, यार, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, इट्स डिस्टर्बिंग माय लाइफ एंड डिस्टर्बिंग XYZ थिंग्स, मैं इस मार्केट में काम नहीं कर सकता, एंड देन दे फॉल बैक, और फिर वो नज़र भी नहीं आते आपको. उसकी रीज़न यही है कि जो ट्रू लीडर होता है वो उसके लिए स्टेप्स जो कि उसको लेते ही फाइट्स. And I think जो survive कर जाता है, he's a true leader. That truly, I think, defines the whole thing as a whole. Yeah, I think one last question that then we can just sum it up all together. Otherwise, there are tons of topics that we can just keep on discussing it out together. And I think so. In the coming, time, I think we'll just invite you again and have another go, because there are a lot of the tech-related discussion that still remains. Like the marketing, the sales. Right now we had a lot of intellectual, soft. Discussion, a soft discussion, which I feel like, I think this sets up the base of the person. This is something that every individual should know about. Like we are not different, we are not different, but there are attributes that we find in ourselves, and then we just try to polish them up, and that's how we just grow over time. And we are in the process of growth as a whole. Absolutely. So that discussion, I think, sets the tone for us. But we'll have another episode very soon, and in which we are going to talk about the tech stuff. We are going to talk about the numbers. We are going to talk about the processes, because like the processes, I think, is the thing that most of the people crumble. They work without processes,
They work, without the funnels, and that is where they end up maybe after a year, 6 months, or maybe a couple of years, and they crumble. So, and that session is going to be for those individuals who already have that some sort of a knowledge in this intellectual or soft discussion. So that sets up the base. One last question that I want to ask, like, what is the best advice that you have ever received in your life that really maybe just set up your direction into a certain extent? Not entirely, because there are tons of advices that we get, and tons of the advices act as a piece of the puzzle and just create a whole puzzle and then, make us grow. So what is the best advice that you have ever received in your life? बहुत ज़्यादा एडवाइसेस हैं. मैं अहादीस की किताबें और जो नेक लोग हैं उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ. I would actually suggest you कि एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनके हयातुस सहाबा एक किताब है, हयातुस सहाबा. तो उस किताब के आई गेस 3 हिस्से हैं, उसको पूरा करें. उसके अंदर बहुत ज़्यादा नसीहतें हैं. दूसरा लुकमान हकीम, उनकी बहुत ज़्यादा नसीहतें हैं, उसको पढ़ें. जो मुझे उनकी सबसे अच्छी नसीहत लगती है, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, और इट्स बेस्ट फॉर पाकिस्तान, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन पाकिस्तान. तो उन्होंने फरमाया, जिसका समरी कुछ ऐसे है, अपने बेटे को नसीहतें करते थे. तो उन्होंने फरमाया कि बेटा ना इतने सख्त बनो कि लोग तुम्हें थूक दें, और ना इतने नरम बनो कि लोग तुम्हें निकल जाएं. So when you're working with people, there always has to be a balance. Be good with people, especially with weak people. लेकिन you have to be very careful about your self-defense. Whoever tries to interfere with your boundaries, I think then there has to be a self-defense shown at that stage. तो अगर आपने पाकिस्तान में survive करना है तो बिल्कुल bravely survive करें. Yeah, that is one of the advices. It still came from the book side of the things. Dragging it further a bit, have you ever met any individual who said one thing to you and you felt like, yeah, this person cracked the right thing out of it, and that advice, anything like this, you felt across from your any friend, maybe your parents or anybody, like this person has said the right thing that I'm just going through right now, and that is the advice that you just took and maybe went a little step ahead. Because I think we meet people, there is a lot in the book, there is a lot in the religious book especially, and I think we have been given a complete guideline. We have been blessed with the best religion, we have been given a complete guideline that we can just follow and prosper. But anything you just came across from any individual, you felt like, this person has said, the right thing. I think कि वो फिर religious, अगर आप उसको कह रहे हैं कि religious side पे ना जाएंगे. No, it's not the religious. I was just saying, like, in the present world, you met any individual. In the present world is कि I think जो अच्छी चीज़ें मुझे लोगों की लगती हैं, जो मुझे अच्छी advice मिली है, वो divide your focus with an 80-20 rule. कि हमेशा, for example, if I am working for my company, so there has to be, और जो money making areas हैं वहाँ पे 80% focus, और जो hustles हैं आपकी, जो community work करते हैं वहाँ पे between 10 to 20% focus. So मेरे कुछ friends ने मुझे ये advice की कि उससे ज़्यादा, बल्कि मेरे बड़े भाई भी मुझे इस चीज़ को समझाते रहते हैं कि कभी भी इस लाइन को ब्रीच नहीं करना, बिकॉज द मोमेंट यू ब्रीच दिस लाइन तो आपकी ज़िंदगी प्रॉबेबली सारी की सारी इम्बैलेंस हो जाएगी. सो जो जितने भी आपके मेन फोकस्ड एरियाज होते हैं, स्पेशली मनी मेकिंग एरियाज, आई थिंक देयर हैज़ टू बी मेजर फोकस ऑन दैट साइड. और जो हसल्स हैं, डू इट कंसिस्टेंटली, स्मॉलर पार्ट्स, बट शुड बी डिफाइंड टू लाइक मैक्सिमम like 20% of your focus. Wonderful. That is one of the key things, though. Thank you very much, and you spared out a time for us and shared out your thoughts, your journey with us, and I think it's going to be extremely helpful for the people who want to learn. Sure. We will encourage the people to learn things out, finding out the keys of the doors that remain, closed, but when you just go into an intellectual way, they open up. Sure, you know that. Absolutely. So we'll find out and we'll just spread the awareness that way, and that is the purpose of bringing that Talk That Matters on board. Thank you. I really appreciate your time and arranging all that. Talk That Matters will serve to the great extent. Absolutely. In terms of bringing in awareness, and soon, inshallah, we'll have you again. Sure. Thank you so much. We'll take it from there. Thank you. Appreciate it.